हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं डे 6 की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिन्होंने मेरी 1 से 5 डेज़ तक की जो वीडियोस देखी, एक्टिविटीज़ जो कि पापा ने दुबई में की और मैंने उनके साथ, तो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वो भी बताएं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको खास लगी। तो आज हम बात करने वाले हैं डे 6 की। डे 6 में हमने प्लान किया कि हम देखेंगे मॉर्निंग में फैल्कन शो और उसके बाद हम करेंगे दून ड्राइव जो कि स्पेशली लोग अनदर कंट्री से आते हैं दुबई में और यूएई में करने के लिए। वो होता क्या, सब आपको वीडियो पर चल जाएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे हमें पहुंचना था होटल के अंदर जो फैल्कन शो के लिए। तो होटल में पहुंच के सबसे पहले पापा ने पी कॉफ़ी। वैसे तो ये कॉफ़ी डैडी को पसंद नहीं आई, बेसिकली मशीन्स वाली, आपको पता ही है हमारे पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो क्योंकि कॉफ़ी ज़रूरी है मॉर्निंग में ताकि जो है बॉडी एक्टिव हो जाए। तो अभी पापा जो है यूज़ टू हो गए थे इस मशीन से कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो रेड ने यहाँ पे कॉफ़ी पी, तब तक आप व्यू दे सकते हैं। ये पूरा लाउंज बार है और जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं इसके आगे जाके है बार। ये कुछ सिटिंग एरिया है बैठने का, साइड में बुक्स रखी हुई हैं। और ये है यहाँ का बार जो कि ओपन होता है आई थिंक आफ्टरनून के बाद। आप देख सकते हैं किस तरह ने सेटअप पूरा जो है एरिया कर रखा है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्त लग रहा है एरिया देखने में। बट अभी जो है ये ओपन नहीं हुई, हम अर्ली मॉर्निंग आ रखे हैं। तो मैंने जस्ट डैडी को यहाँ का व्यू दिखाने के लिए मैं ये लेके आया। आप देख सकते हैं इन्होंने जो सेटअप है पूरा ये ट्रेडिशनल तरीके से कर रखा है। हालांकि आजकल मॉडर्न टाइम में बहुत सारी चीज़ें में अपडेट हो चुकी हैं अगर आप दूसरे होटल में जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो है पुराने जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है, जो मतलब पहले के टाइम का जो व्यू होता था, उन्होंने अभी भी इसको जो है यहाँ से रिमूव नहीं किया है कम्प्लीटली, बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रखा है और वही इस होटल की जो है पहचान। तो इसी तरह हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पे घूम फिर के उसके बाद अपने फिर यहाँ पे पी ग्रीन टी। मैंने भी डैडी से ग्रीन टी पी। अभी हमको जो है थोड़ा सा वेट करना था क्योंकि अभी तक वो जो फील्ड गाय है जिस जो कि हमको लेके जाएगा, जिसने कि हमें डे 5 में भी सारी कैमल एक्टिविटीज़ और सनडाउनर करवाया, उसके अब तक आया नहीं था वो। तो हमें तब तक जो है यहाँ पे वेट करना था, तो इसलिए हम थोड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, व्यू को एंजॉय किया। मॉर्निंग में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था होटल के अंदर। तो हम लोग यहाँ बैठे रहे, हमने यहाँ पे कॉफ़ी ग्रीन टी सब हमने इन्जॉय किया विद सम लाइट स्नैक्स। सो कॉफ़ी एंड कुछ लाइट स्नैक्स इन्जॉय करने के बाद डैडी को बाहर लेके आया जब थोड़ा सा जो है लाइट हो गई थी। तो बाहर का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम प्लेन, नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं है दूर तक, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पे कि हमको जाना है। उससे पहले देख सकते हैं वाइट वाइट जो डॉट है, आप आई थिंक क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, बट वो सब ओरिक्स हैं जो कि यहाँ का नेशनल एनिमल है। ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक होता है पास से देखने में वो, लेकिन बहुत प्यारा भी है। तो ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमको जाना है फैल्कन शो के लिए, जो कि हम अभी कुछ देर में वहाँ पे जाएंगे। और जो वो शो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बने रहे इस वीडियो में। तो ये खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने के बाद तब तक समय होगा हमारे जाने का। फील्ड गाइड की टीम आ गई, आप देख सकते हैं मेरे आगे चल रहे हैं जो एक लेडी और जेंटलमैन, उनको हमें फॉलो करना है। पीछे देख सकते हैं तब तक सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। ये जो जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं ये है रेस्टोरेंट का आउटडोर एरिया, जहाँ पे कि पब्लिक लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब करते हैं बैठ के प्यारे से व्यू के साथ। तब तक हम सब पहुँचते हैं अपनी लोकेशन में, आप इंजॉय कीजिए। तो थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच गए फाइनली इस लोकेशन पे। ये लोकेशन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट के टेरेस से भी दिखाई थी। तो बेसिकली हम वहाँ पे बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। अभी जो ये मैडम है पूरी सीट जो है पूरी रेडी कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर से जो है कवर निकाल रहे हैं। तब तक आप सामने देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से जेंटलमैन ने उस बर्ड को निकाला है जिसको कि यहाँ पे ये लोग प्रेजेंट करेंगे। और जो बता दूँ, फैल्कन जो है यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है, नेशनल बर्ड है यहाँ का। देखने में बहुत प्यारा, सेम टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको पास से। अभी इन्होंने जो है तो कवर, इसकी जो आइज़ हैं वो कवर कर रखी हैं। और जो जेंटलमैन और जो लेडी हैं दोनों के पास अलग अलग बर्ड हैं। दोनों अपने बर्ड को पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, पूरी जानी डिटेल्स इस फैल्कन के बारे में, क्या है ये, कैसे ये रिएक्ट करता है किसी के सामने, क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या खासियत है। But really not all about us this morning.
morning. It's about these beautiful birds that we brought for you guys this morning. Now, who I have here on my left hand side, her name is Haya, and she is a female peregrine falcon. Also in this part, falcon is known as a Shaheen. Now Taskia over here, she's quite an old bird. She's already about 12 years old, but still flies very well for us. But after we are done talking for a bit, we'll give her some flying time and give you guys a bit of a demonstration of how agile and fast these birds can really be. Now in the world of falcons, there are three major falcon species worldwide. You get your JAI falcon, which is the largest falcon in the world, your Seika falcon, second largest falcon in the world, and then you get your peregrine falcon, probably the most famous out of all the falcons because they are well known for their incredible speed. Now a peregrine falcon is classified as the fastest animal on the planet. So not your cheetah, your peregrine falcon, where these animals can reach speeds of over 200 kilometers per hour. The fastest ever recorded speed for peregrine falcon is 389 kilometers per hour. That's almost 220 miles per hour. That is quite incredible. Now how these falcons get to these incredible speeds is the way that how they hunt out in the wild. These falcons, when they're hunting, they like to use a lot of altitude to their advantage. So the higher they go, the more speed they can build up. So once they have the height advantage, they quite simply tuck their wings very tight to their body and they literally dive bomb towards their prey. Even though this bird only weighs 800 grams, she can reach incredible speeds from a great height. Now for this morning when I'm flying higher, please do not expect her to fly at 200, 300 kilometers per hour. That's not going to happen. Reason being, Haya will not be flying at high altitude as she does in the wild. And of course, I'm very happy that she's not flying 200 kilometers per hour because I do not want a falcon flying at my head at 200 kilometers per hour. It's not a very good idea. Now, falcons and falconry in this part of the world is a big part of the culture and the history of the Emirati people. And historically, falcon species, just like Haya over here, were used by the Bedouin people as a source of hunting. They used them as a hunting companion. So each winter season, falcon season we call it, they will trap a wild falcon, they will train the falcon, and then they will use the falcon to catch a type of bird that they have out here in the desert known as a McQueen's bustard. The McQueen's bustard, also locally known as a habara, is a bird that stands about knee height, weighs about 1.2 kilograms, and if your falcon can catch you that bird, you can now supplement your family's diet with some extra protein. So for the Bedouins, these birds were very, very important. Now for us now in the modern times, there's falconry all around the world. Falconry can be traced back 5,000 years in the past, how popular falconry really is. But nowadays when we use falconry, we don't have to use it for means of survival. We've got a lot of fancy supermarkets and restaurants to go get our food. But still, we practice falconry to demonstrate the speed and agility of these birds, and of course celebrating the heritage in this country. They use their falcons in a popular sport known as falcon racing. Falcon racing normally takes place anywhere between December all the way down to about February, March, the coldest time of the year, and then all the locals come together with their very expensive falcons and then they will fly and compete with each other. Also now in the modern times, we do not take falcons from the wild. We go to a falcon souk or a market, we purchase our falcons, we pay top dollar for them, then we train them and then we fly them in demonstrations. Now for this morning, what we're going to be doing, we're going to do this. Hey, more than welcome, grab a seat. You guys, so like I will be demonstrating this morning is actually what we use to keep our birds fit and keep them trained. So we have got a little bit of equipment we can go through. You will see we have got this little device over here. This is known as a lure or a tilwa in Arabic. This is what we're going to use to exercise Haya this morning. It's an imitation of a small bird, and Haya likes to hunt other types of birds. So she's going to see the lure and hopefully come back to me this morning. If she does not come back to me, I have got this little tracking device over here. This is known as my telemetry, and I can use this to get Haya back if she goes on an unscheduled holiday to Oman. Then you will also see Haya is wearing a hood or a burqa, they call it in Arabic, to close the eyes. Now the reason for closing the eyes of the falcons, because falcons are visually stimulated. So 80% of their senses will come from their eyesight. So if I cover their eyes, I eliminate the biggest part of their senses, and they will go into a calm state of mind. They relax, out of sight, out of mind. What they don't see does not exist. She can hear me, but she does not respond upon hearing. She responds upon what she actually sees.
Alright, so while I'm flying higher, I've got just one favor I ask from you guys, to please remain seated. Do not stand up anytime during the flight. If she comes from behind and she comes in quite low, there might be a chance for her to fly into you, but if you stay seated, then we will eliminate all of those chances. Can I ask you something? Yes. Could you tell us when the sun is rising? It's going to be very difficult this morning. It's a bit hazy, but I'll let you know if I see something. If you see any change in the sky, if you could tell us so we could just turn I around. don't see any change, but I'm going to fly now, so we look at the Falcon now. Alright. So, guys ready? All good? So we take the little burqa off because we don't want her to fly with the hood on because she can't see. This will then turn into a crash helmet. So we take off her little hood and she is going to have a nice little look around and make sure that there's no immediate danger for her. Now, Falcon's eyesight is very good. She can see far, she can see wide, and she normally sees detail that we cannot see. So if she sits for long on the glove and she's staring in a certain direction, that normally gives me the indication there's something that doesn't make her very happy, something that makes her displeased. But she has a good look around, has a rouse, shake the feathers, get her flight feathers all in check, just like how your pilot before your flight does a pre-flight check, and then she will be off and ready to fly. Okay, shaky shake. Brrr. Oh, she's really taking her time this morning. There she goes. Alright. So like I said, we use the lure technique to lure the bird back in. Too long, especially in the summertime. Hut! So as you can see, she's quite committed to the lure. She really loves doing this. She's very fast. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये जो है पंछी को उड़ा रहा है इधर से उधर। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो है ये लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसके लिए कि इनको खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कैसे आई थिंक इनके हाथ में कुछ चीज़ है जो कि जिस तरीके से इसको घुमा रहा है और उसको अट्रैक्ट करने के लिए बर्ड को अपनी तरफ, एंड वो जो है बर्ड एक्टिविटीज़ कर रहा है सेम टाइम पे। पर मैं उससे पहले आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने पूरा भी पीछे जो सुना है, इसको समझा है, इसने जो बर्ड के बारे में बताया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस प्यारे से पंछी का नाम क्या है। सो फाइनली उन्होंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है यहाँ पे यूज़ की, जिसके कारण जो पंछी है आराम से लैंड हो गया सेफली। बट सेम टाइम पे इसको देखने से जो है बहुत ही यार डर भी लग रहा था, अजीब सा, और एक किस्म का बहुत ज़्यादा एक ब्यूटी भी है इस पंछी में, जो कि अगर आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो इस तरह जो है इस जेंटलमैन ने जो है ये एक्टिविटी फिनिश की। इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसके बाद फाइनली हमारे पास आ गई ये लेडी, जिनके पास भी है एक दूसरे किस्म का बर्ड, जो कि अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। उससे पहले एक्सप्लेन कर रही हैं कुछ बर्ड के बारे में, जो कि आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। Yes. So what happened was, when Oscar came to Omaha, when she was still a little teeny tiny baby, they thought it was a male. So hence the name Oscar. But only when she was about a year old, they took her to the vet and found out it's not a male, but a female. But because the name already, she started responding really good to the name, so they just kept it. Yes. Oscar? Can I come and say hello? Perfect. Yes. Very, very vocal this morning. She's excited to be here, mainly for the food, but still excited. So like what Nay was mentioning, with the falcons you have, this is about an 80% food-based relationship with the falcons. But when it comes to the owls, or even the eagles or the hawks, they have to trust you. Because if they do not trust you, they will not come to you. They will literally just sit there, not respond. You show them food, they will not come. Why? Because they don't see it as safe. So they would much rather stay hungry than take the risk. Yes. So I would say this is more about a 70% food-based and more like 30% the connection between me and Oscar. But yeah, she's very, very vocal, and she will tell us when she's not happy, hence her growling. I want to put it like that. There we go. And then also having a look right on top of her head, there's two little feathers pointing up. Now they're still part of the head itself, but later on you'll see it go straight up. And the moment that those two little feathers are up, Oscar's not happy anymore. She wants to go home.
cutest part of the head. So she's happy whenever she gets food, basically. Conclusion. So just give a female food and she's happy. Guys, take notes. So when it comes to the owls, what they'll usually do for hunting is they will hunt at nighttime or late evening, early in the morning, like this time, just before sunrise, and then also just after sunset, and then straight through the night. She will be active. Now what she'll typically go for is your small little rodents, your jerks, jaboas, and gerbils out here, small little mice, lizards, your desert geckos, it's active at night. Literally whatever she can catch. And even here at Omaha, she has a very big luxury cage, and if there goes a little lizard in that cage, she will catch it, and she will eat it, and she will be overweight. So like Renee mentioned, we feed them according to the body weight, right? So if the body weight is higher than it should be, then we give them a little bit less food, but still food. And then if it's too low, it's like a free meal. Yes, and it's just to make sure that they do listen. Because also, yet again, what will happen if they're not hungry, they will not listen to us, right? Because they would much rather, or Oscar likes to think she'll be able to survive out here. But the first thing she'll forget is there's something called other predators. Which here at Omaha, it's not a piece of me, darling. So here at Omaha, there's not really any other predators, right? Oscar is the predator in her cage. So out here, what she'll do, if she caught something, she'll eat it out in the open. And that will leave her exposed. Why? Because now all the animals active at night, especially the foxes, other predatory birds, or even other owls, will see this, come attack her. Why? Because it's a free meal, right? They just have to fight Oscar off and they get the free meal. And Oscar, unfortunately, she will lose. You need to stick the landing. But yeah, Oscar, she will lose that fight with any wild falcon or any wild owl out here. Yes? So how they would make this hunt now is with the lovely talons, stick that into the back of the prey. So as she's coming, feet first, look at those big claws, the big nails. Feet first, trying to get to that spinal cord, break it, unable the prey from moving away, running away, and then she can have a feast. Not very nice though, but very effective. Very, very effective. So while falcons rely on speed and agility for hunting, the owl is more silence and camouflage because they want to startle the prey. So as Oscar is hopping to my glove, with her wings, she has longer feathers, rounder feathers, and serrated tips on those feathers, which means now she can slice through without making any noise. Well, apart from her vocalizing, without making any noise with her feathers or flying. सो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया इस पंछी का नाम क्या है और कितना प्यारा है ये और इसकी खासियत। तो इसके बाद इस लेडी ने जो है सबके साथ इसकी फ़ोटो क्लिक करवाई, पर लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद। एंड आप देख सकते हैं पास से जो है और भी ये प्यारा लग रहा है। इन्होंने 1 बाय 1 जो है सारे गेस्ट को ये पंछी को दिखाया और फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। सो कुछ इस तरह से हुआ ये फैल्कन शो ख़त्म। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से जो है सनराइज़ हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी हमारा दून ड्राइव, उसके में अभी जो है टाइम था, तो मैंने कहा पापा चलो आपको आगे तक लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ, जहाँ पे कि ये एनिमल्स जो है पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं। इनके लिए स्पेशल जो है इन्होंने यहाँ पे एक एरिया बना रखा है, शेल्टर जिसको आप बोल सकते हैं। तो चलने के लिए काफ़ी है यहाँ पे, आई मीन काफ़ी दूर दूर तक जो है ऐसे इन लोगों ने इस एरिया को मतलब डिवाइड कर रखा है, बट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हालांकि आप बोलें एरिया पूरा ओपन है, जानवर रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ का डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरा इस एरिया को मेंटेन कर रखा है, जानवरों का भी ध्यान रखा है, इसमें पूरा नीट एंड क्लीन कर रखा है। तो कुछ देर चलने के बाद हम पहुँच गए इस लोकेशन में। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे जो है एक पक्का सीमेंट का जो है तरीके से एक जो
मतलब पानी को यहाँ पे स्टॉक कर रखा है। ये लोग इसको रिफ़िल करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे ऑरिक्स, गज़ल या फिर पंछी जो भी हैं यहाँ पे एनिमल जो आते हैं यहाँ पे अपना पानी पीते हैं, ताकि उनको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। गर्मी यहाँ पे मतलब समर टाइम पे 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितना होता है। इंडिया में फिर भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो दूसरी तरफ से देख सकते हैं जो है छोटे छोटे सब विलाज हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो इस तरह जो है हमने सारी एक्टिविटी फिनिश की। इसके बाद हम चलेंगे दून ड्राइव के लिए। तब तक बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।